बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो नए आने वाले व्यूअर्स से कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली तमाम वीडियो जो है वो पहुँचती रहें। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चंस। बायोलॉजी सेकंड ईयर एग्जाम बायोलॉजी पेपर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी। तो पहला है व्हाट आर पायरोजीन्स, व्हाट आर पायरोजीन्स। और क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट and what changes occur in a cell in such environment. What is the difference between hypotonic and hypertonic environment? और question number 3 है write structure formula of urea and uric acid. Write structure formula of urea and uric acid. और number 4 है define homeostasis, give its importance. और नंबर 5 है define anhydrobiosis with an example. और नंबर 6 है differentiate between piclotherms and homeotherms. Piclotherms and homeotherms. और नंबर 7 है differentiate between ectotherms and endotherms. और नंबर 8 है what is sciatica, what is sciatica and its causes. और नंबर 9 है what is foramen triochium, how it is formed. और नंबर 10 है what is the role of vascular कैम्बियम. तो स्टूडेंट्स नंबर 11 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव फ्लाइट. और नंबर 12 है व्हाट इज हर्निएशन ऑफ डिस्क्स, डिफाइन डिस्क स्लिप, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हर्निएशन ऑफ डिस्क्स. और नंबर 13 है कैरेक्टराइज कैरनकाइना सेल्स. और नंबर 14 है compare hinge joint with ball and socket joint. Compare hinge joint with ball and socket joint. और 15 है distinguish between axial skeleton and appendicular skeleton. Number 16 है explain two types of nostic movements. Compare epinosty and हाइपोनास्टी. और नंबर 17 है व्हाट आर एक्सन्स एंड डेंड्राइट्स, हाउ एक्सन्स डिफर फ्रॉम डेंड्राइट्स. नंबर 18 है डिफरेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क. 19 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CNS एंड PNS. और नंबर 20 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड और पैराथॉर्मोन. अच्छा स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज पार्किंसंस डिजीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्किंसंस एंड एपिलेप्सी. और क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट आर गैस्ट्रिन एंड सिक्रीशन. और 23 है डिफाइन सॉल्टरी इंपल्स एंड सिनेप्स. और 24 है गिव टू कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ जिबरेलिन्स. 25 है व्हाट इज द एक्शन ऑफ निकोटीन ऑन कोऑर्डिनेशन. और 26 है व्हाट इज पार्थेनोकार्पी, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम पार्थेनोजेनेसिस.
और 27 है what are viviparous and ovoviviparous animals? What are viviparous and ovoviviparous animals? Differentiate between oviparity and viviparity. और क्वेश्चन नंबर 28 है क्लासिफाई द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 29 है डिफाइन फोटो पीरियोडिज्म एंड राइट इट्स इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स। और 30 है व्हाट इज मेंट बाय एपोमिक्सिस। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट इज वर्नलाइजेशन। और 32 है हाउ आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस आर प्रोड्यूस्ड। और नंबर 33 है हाउ टेस्ट ट्यूब बेबीज आर प्रोड्यूस्ड। और 34 है व्हाट डू यू मीन बाय ओपन ग्रोथ। और 35 है व्हाट इज मेरिस्टेम and its types and what are their role. 36 है define organizer and inducer substance. 37 है what is the difference between growth and development. What is the difference between growth and development. 38 है what is the difference between somatic and splanchnic mesoderm. और 39 है what is genetic code, what are nonsense codons and their function, where codon and anticodon are situated. और 40 है what is heterochromatin, what is euchromatin. और 41 है define mutation and explain the difference between chromosomal aberration and mutation. तो स्टूडेंट्स नंबर 42 है what is phosphodiester linkage, draw structural formula. और 43 है define chromosomal theory of inheritance. और नंबर 44 है define point mutation and state with examples. Number 45 है define transcription and how it is initiated. What is the function of RNA polymerase in transcription. और 46 है write symptoms of Down syndrome. और 47 है what are the symptoms of Turner's syndrome, how it is caused and give its features. और 48 है what is metatic apparatus, give its functions. और 49 है differentiate between go phase and S phase of interphase. What is metatic phase? Describe changes during G1 phase. और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 50 है how does mitosis in plant cells differ from that of animal cells? How cytokinesis occur in plants? तो स्टूडेंट्स 51 नंबर क्वेश्चन है what is Bombay phenotype? What is Bombay phenotype? 52 है what is Modi. और 53 है how does ABO incompatibility protect the developing baby against RH incompatibility. और 54 है define gene linkage and gene linkage groups, give their number in human beings. और 55 है what is test cross, why did Mendel suggest this cross, give its uses. और 56 है define laws of Mendel.
और 57 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। 58 है डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंस एंड एपिस्टोसिस। 59 है व्हाट आर सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेड्स। और नंबर 60 है व्हाट आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। और 61 है व्हाट आर द टू गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 62 है व्हाट आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स, गिव टू एडवांटेज ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। और 63 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स विवो एंड इन विवो जीन थेरापी। और 64 है व्हाट इज जीनोम एंड जीनोमिक लाइब्रेरी। और 65 है व्हाट इज द टोटिपोटेंसी एंड व्हाट इज टोटिपोटेंट सेल। और 66 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर सीजर्स एंड मॉलिक्यूलर वेक्टर्स। और क्वेश्चन नंबर 67 है व्हाट इज द रोल ऑफ मॉलिक्यूलर कैरियर द वेक्टर, एक्सप्लेन PSC 101 and PBR 322 what is the role of lambda phage during recombinant DNA technology। और स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 68 है व्हाट इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट। और 69 है गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू डार्विनिज्म। और 70 है नेम सम इंपॉर्टेंट वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऑफ मैन, गिव वन एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 71 है व्हाट आर होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स, गिव एग्जांपल्स। 72 है व्हाट इज ग्लेजिंग एंड हाउ इट अफेक्ट्स सॉइल। नंबर 73 है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीडेशन। 74 है डिफाइन इकोसिस्टम, राइट इट्स कंपोनेंट्स। 75 है डिफाइन बायोस्फीयर। 76 है डिफाइन पैरासाइटिज्म। और 77 है डिफाइन कमेंसलिज्म विद एग्जांपल। और 78 है डिफाइन फूड चेन एंड फूड वेब विद एग्जांपल्स। और 79 है explain ecological niche, what are habitat and niche। और 80 है what are archaeology and synecology। और 81 है what are hydrosphere and xerosphere। और 82 है what are primary and secondary succession। और 83 है explain alpine and boreal forests। और 84 है what are zooplankton and phytoplankton। और 85 है what is limnatic zone, what are littoral and profundal zone। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 86 है and list two adaptations in plants and two in animals for a terrestrial ecosystem। और 87 है give main reasons of water pollution। 88 है what do you mean by non-renewable resources, explain renewable and non-renewable resources। 89 है what measures should be taken for conservation of energy, mention any 4 ways of saving energy। और 90 है what is difference between afforestation and deforestation। और 91 है define soil and give its basic constituents। और 92 है what are population explosion and population pressure, write reasons of world population explosion। तो स्टूडेंट्स ये तो थे
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और ये तकरीबन 92 क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने ये क्वेश्चंस अच्छी तरह याद करने हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।